आज ऑन टाइम हो ना, रादर बिफोर टाइम। चैलेंज लिया था मैंने कल, मैंने कहा नहीं अब ज्यादा हो गया, आने लगो टाइम। आज हमें जजमेंट स्कूल, बाकी बच्चे आज 5 मिनट कुछ करते हैं। इतने कोई डाउट्स हैं आपके तो वो पूछो। एनी डाउट? कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक दे देना। हाँ वो आज ही करना था। कोई ना, आफ्टर दिस क्लास कर लेना, बीच में ब्रेक दूंगी मैं 10 मिनट की। भूल गई, सब भूल गए वो। क्या है ना, फ्रेंडली सूट्स और अब क्वेश्चन भी याद नहीं है। अब पूछो मैडम, सॉरी बार बार इंटरप्ट कर देते हैं ये बच्चे आपको। हाँ जी। इमूवेबल की मूवेबल? इमूवेबल जी बिल्कुल। वो वॉइडेबल हो जाएगी एट दी ऑप्शन। वो इसलिए क्योंकि आपने रजिस्टर जो है वो किसी और जगह पे करा ली, बिकॉज द पर्सन वाज रिजाइडिंग देयर एंड ही वाज अनेबल टू कम्युनिकेट टू दैट प्लेस। ऐसे बीमार था या कुछ और रीजंस थे उसके कारण। कोई डाउट नहीं? ये म्यूट करो।
ये है कल वाला आंसर। आप ऐसे क्यों करते हो, घबराते हो? दिस शोज योर नर्वसनेस। ये मत किया करो, नहीं तो एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं। थैंक यू। और अच्छा लिख सकते हो। स्क्रीन क्या है? टेल सेक्शंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट। हाँ जी हरमन, आई विल डेफिनेटली टेल यू। कल हम स्टेजेस भी बनाएंगे, आज पहले जजमेंट्स लिख लेते हैं सारी। टाइम बचते तो आज स्टेजेस बना लेंगे, नहीं तो जो रह गया हमारा रीड करने का वो रीड कर लेते हैं। एंड उसके बाद कल आपकी स्टेजेस बना के आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कराऊंगी। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, कल ये लेक्चर मिस मत करना। हाँ, उसके बाद द चांसेस आर मीगर कि मैं सीपीसी और आपका कॉन्स्टी कल लूंगी। कल शायद मैं सीपीसी कॉन्स्टी नहीं लूंगी, रजिस्ट्रेशन लेके आई विल लीव यू। ठीक है। Just a second. Anyone who has a doctor family? कौन है? Cheese. I mean, specialization. Medicine. Good. चलो बढ़िया है फिर, मतलब you should have. हम्म हम्म। बस एक बार मैं वहाँ का कोर्स कर लूँ, इस बार और जाऊँ 15 नवंबर को। नहीं, मेडिसिन तो उन्होंने भी कम कर दिया। इट्स जस्ट द 3 मेडिसिन दैट आई एम टेकिंग, 2 in the morning and 1 in the evening। तो अभी 15 को एक बार जाने तो उसके बाद। हम्म। और जलन। उसके बाद वो कुछ भी खा रहे हैं हम। एंड स्पाइसी फूड। हाँ, नॉर्मल स्पाइसी। गुड। हम्म। मैक्स तो मैक्स है। चलो, आई टॉक टू यू फिर तो उसके बाद। केसेस लिखने शुरू कर दो अब। अभिषेक नाथ। अभिषेक नाथ सरवारिया। अभिषेक नाथ सरवारिया, SARVARIA। सरवारिया, SARVARIA। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। No, it's 2024. I'm so sorry. 2024 Supreme Court.
इसमें लिखो, it has been held that section 57 subsection 3 section 57 subsection 3 of the Indian Registration Act of the Indian Registration Act 1908 provides that the copies of general power of attorney provides that the copies of general power of attorney and special power of attorney and special power of attorney can be given by the registering officers can be given by the registering officers only to any person executing or claiming under the documents to which such entries respectively refer, or to his agent or representative, Section 51 subsection 3 of the said act Section 51 subsection 3 of the said act entails the general power of attorney entails entails the general power of attorney or the special power of attorney as part of book 4 which is immune from public scrutiny, and such thing was challenged before the Honorable Supreme Court, that it should not be immune from the said scrutiny which is yet to be decided by the Honorable Supreme Court. अभी तक प्ली मूव हुई है बच्चे, नॉर्मली ये कहते हैं कि जे इम्यून है, बट वो कहते हैं आरटीआई आने के बाद आप सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या नॉर्मल पावर ऑफ अटॉर्नी को इंस्पेक्शन करने से रोक क्यों रहे हो? अगर आप इंस्पेक्शन करवा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जो करप्ट मीन्स उसमें यूज हुए होंगे वो पता चल जाएंगे, तो आप इसको स्क्रूटनाइज कराने के लिए अलाउ कराओ, which it is yet to be decided. 10th सितंबर को एक प्ली डली है 2024 सुप्रीम कोर्ट में कि we should be given authority and we should be given the permissions to inspect the general power of attorneys in property transactions. Whether they decide it in the favor or not, that needs to be checked अभी, ठीक है? तो इसके ऊपर जो डिसीजन है वो प्लीज अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि कल तक आ गया नथिंग लाइक इट, कल तक नहीं आया तो बाद में आप इसको अपडेटेड रखिए. नेक्स्ट आ जाओ. आगे लिखो केस का नाम. पहले एक क्वेश्चन लिखो, फिर केस का नाम लिखेंगे. Can a sale deed be cancelled? By the sub registrar
by the sub-registrar registering the same. No? Not directly, but specific relief act says that there shall be cancellation of an instrument. So whether that instrument is covered under this also, any sale deed, it's an instrument, no? And there has to be a cancellation of instrument as far as section 31, 32, 33 is concerned of the SRA. Good. बिल्कुल, वेरी गुड. देखो, जहां पे इसको नॉलेज है ना, वहां पे पूरे अच्छे से बोलता है. जहां नॉलेज नहीं है, उसने 4 सवाल एक्स्ट्रा पूछने हैं कि मेरे को प्रैक्टिकली भी आज ही ट्रेंड कर दो आप. सो गुड. ठीक है, इसमें लिखो सत्यपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2016 सुप्रीम कोर्ट. It has been held that registrar has no power that registrar has no power under the registration act to annul a registration once the document is registered. Once the document is registered, it is not open to any authority. It is not open to any authority to cancel the registration under the registration act under the registration act. Even the power conferred on the registrar power conferred on the registrar as per section 68 cannot be invoked to cancel the registration of the documents already registered. Hence, cancellation of a registered sale deed can be affected either by way of declaration by the civil court or by the registering authority to whom the powers
of cancellation of sale deed, to whom the powers of cancellation of sale deed have been vested by some appropriate legislation, by some appropriate registration. Means whatever are the cases, even if there has been fraud that has been played, still the registrar or the sub registrar, as the case may be, does not have the power to cancel the instrument. It is only the power lies with the court. कोर्ट करेगा, हाँ, उसके बाद, या हमने प्रॉपर लेजिस्लेशन में उनको वो पावर एक्सप्रेसली कन्फर कर रखी तो जो अब इसके बाद केस का नाम है बाबा साहेब वर्सेस बाबा साहेब, BABASAHEB, Baba Saheb versus RV Barde, R.V Barde, it's BARDE, 2024 Supreme Court, BARDE, 2024 Supreme Court, लिखिए. It has been held that conveyance by way of sale would take place only at the time of registration, of a sale deed as per section 17 of the Registration Act. नेक्स्ट आ जाओ. कंवर राज सिंह, ये इंपॉर्टेंट केस रहेगा, लेटेस्ट है तो. कंवर राज सिंह, KANWAR, कंवर राज सिंह, ब्रैकेट्स में लिखो डेड, ब्रैकेट्स क्लोज, थ्रू LRs versus Gejo, it's GEJO, ब्रैकेट्स में लिखो डेड, ब्रैकेट्स क्लोज, थ्रू LRs and others, 2024 Supreme Court. It has been held that, रिटरेशन ही है बट लेटेस्ट केस है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो. It has been held that the registered sale deed operates from the date of execution where the entire consideration is paid, the corrections made unilaterally by one party after the execution
after the execution of the sale deed without the knowledge and consent of the purchaser without the knowledge and consent of the purchaser will have to be ignored only if the changes have been made only if the changes have been made with the consent of the original plaintiff with the consent of the original plaintiff, then the same could relate back then the same could relate back to the date of the execution to the date of the execution, otherwise not otherwise not एक और केस लिखो, बहुत पुराना केस है, राम सरन लाल, शायद लिखवाया भी है मैंने तुम्हें, डोमिनी वाला केस लिखवाया है शायद, राम सरन लाल वर्सेस डोमिनी क्योर 1961 के आसपास शायद लिखवाया है, दोबारा लिख लो, हार्डली मैटर्स, इट्स डोमिनी क्योर पहले एक और ऐसे करते थे क्यू, सॉरी नॉट क्यू, इट्स KUER, डोमिनी KUER, राम सरन SARAN, राम सरन लाल वर्सेस डोमिनी, नॉट दामिनी, इट्स डोमिनी क्योर, कोर है वैसे तो, KUER 1961 सुप्रीम कोर्ट. It was a constitution bench decision. It has been held that the sale would be completed when the deed was registered and thus the description of the property recorded in the deed will prevail. Moreover, it also clarified that Section 47 solely pertains to a document documents करें ना, apostrophe s वाला, documents application after its registration and is unrelated to the finalization of the sale if the instrument is a sale deed. It was further established that
upon registration of a document, that upon registration of a document, it will be effective from an earlier date. It will be effective from an earlier date as mentioned in section 47 of the Registration Act. ठीक है जी. पिछले वाले का, पुराने का 1961. लिखो एक और, मेसर्स पॉल रबड़ इंडस्ट्रीज, मेसर्स पॉल रबड़ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अमित चंद मित्रा एंड अदर्स. अनदर लिख लेना, अमित चंद मित्रा एंड अनदर, 2023 Supreme Court. It has been held that while interpreting section 49 of the Registration Act, while interpreting section 49 of the Registration Act, comma, an unregistered sale deed, an unregistered sale deed, brackets में लिखो, that requires compulsory registration, that requires compulsory registration, brackets close, can be admitted in evidence, registration, brackets close, can be admitted in evidence to show the nature and character of possession, to show the nature and character of possession, and character of possession only when the nature and character of possession, the nature and character of possession is not the main term of the lease, is not the main term of the lease, and is not the primary dispute. So main term of the lease and is not the primary dispute before the court. याद है section 91 कहाँ लगता है? Where the terms of the contract, grant and other disposition of the property is required by law to be in writing. It has been in writing, right? So if it is not the main term, which does not require registration, can you admit it in evidence? Yes, then 91 will prevail, 49C will not prevail. Just a second. एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, इफ देर हैज बीन अ टेनेंसी अग्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, वेदर इट रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. यूं क्या था फिर? हाँ है ना, ये भी ये सेम ही था. अब मैं पढ़ रही हूँ, सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है. The tenancy agreement in question is a compulsory registrable document as per section 17 of the Registration Act, because the agreement itself provides for a term which is a 5 year. So if it is more than 1 year, of course it requires compulsory registration. Then इसके बाद एक और चीज पढ़ रही हूँ, 2020 की जजमेंट है ये. The contents of an unregistered lease
agreement were inadmissible in evidence. Why? Because the contents were the main contents of the document, and that is why it was inadmissible. Why? Leases from year to year requires compulsory registration. Then ये आपको शायद टीपीए में अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें यही था. नेक्स्ट आ जाओ अब केस. लिखो जी केस का नाम. ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अनदर वर्सेस भानु प्रताप सिंह वर्सेस भानु प्रताप सिंह 2023 Supreme Court. 2023 Supreme Court. क्वेश्चन क्या था ये समझना. Once a lease has been registered as per section 17 of the Registration Act, can it be altered or amended by exercising the power of the High Court under 226 of the Constitution? Can we invoke, or simple way में, can we invoke writ jurisdiction of the High Court to alter and amend the lease which has already been registered as per the Registration Act? अभी इसका similar सा question answer दिया है. No. The answer is no. Why you cannot invoke? Because the process is, once a document is registered, as far as this, that does not require any alteration or amendments unless and until you make an application first to the registering authority concerned. And if they feel and found satisfied, then only you can do so. लिखो इसके अंदर. वो exemption हो सकता है. लिखो. It has been held that when a lease deed is executed after compulsory registration under section 17 it is nowhere open to be altered or amended even by the High Court in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. Only for reference of just the superintendents, but that too very rarely, because that's a specific statute which prescribes a particular authority. अगर वो authority fail हो जाती है, then only, otherwise no. केस का नाम आर हेमलता वर्सेस कस्तूरी KASHTHURI 2023 Supreme Court. लिखो. सुना केस है, मे भी तुमने पढ़ा होगा इसको कहीं. It has been held that section 17 1A of the Registration Act 17 1A of the Registration Act is the only exception to the proviso
is the only exception to the proviso of Section 49 of the Registration Act that is, an unregistered agreement to sell which is otherwise required to be compulsorily registered shall be admissible in evidence in a suit for specific performance shall be admissible in evidence in a suit for specific performance in terms of the proviso to section 49 of the Registration Act, in a suit for specific performance in terms of the proviso to section 49 of the Registration Act, क्या लिखवाया मैंने लाइन पूरी बोलना एक बार उससे पहले ओके ठीक है दैट शैल बी एडमिसिबल इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ठीक है जी नेक्स्ट आ जाओ के क्वेश्चन लिखो कैन अ रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड be cancelled by mutual consent? Can a registered conveyance deed be cancelled by mutual consent? Yes or no? ठीक है केस का नाम लिखो लतीफ एस्टेट लाइन इंडिया लिमिटेड लतीफ एस्टेट लाइन LINE not loin line India Limited versus Khadija Amal it's HADEEJA Hadija HADEEJA Amal and others 2011 ठीक है it's not the Supreme Court judgment it's some of the High Court judgment it has been held that the conveyance deed cannot be cancelled
cannot be cancelled even under the mutual consent. क्या बंद हो गया? Even under the mutual consent लिखो आगे. Since sale of immovable property by a conveyance or sale deed requires compulsory registration if the value of the property is 100 and above. If the value of the property is rupees 100 and above, however, as per section 62 of the Indian Contract Act, with regard to unilateral deed of cancellation, it is required that to rescind any contract which does not require any further performance from the parties, all the parties therein must agree and execute a new contract rescinding the old one. Hence, there is no express provision. क्या हो गया तुझे आज? Hence, there is no express provision in Registration Act, as well as in Transfer of Property Act, that deals with the cancellation of a sale deed. / conveyance deed. Next case. On the basis of possession. लिखो जी. ARC India Limited versus SP Velautum. It's Velautum. VELAY Velautum. UTHM and others 2022 Supreme Court. इसमें लिखा है, लिखो.
it has been held that a registering authority, a registering authority under the Registration Act, God bless you, under the Registration Act, while registering a sale deed, while registering a sale deed, executed by a power of attorney holder, executed by a power of attorney holder, is bound to verify, executed by a power of attorney holder, is bound to verify if such power of attorney empowers the agent, if such power of attorney empowers the agent to sell the property, to sell the property. As per section 34 subsection 3, as per section 34 subsection 3, clause C, an obligation has been imposed on the registering officer, an obligation has been imposed on the registering officer to satisfy himself, to satisfy himself about the right of a person, the right of a person, to satisfy himself about the right of a person appearing as a representative, a sign or agent. Agent. There is, next para, and there can be no dispute, there is and there can be no dispute about, there can be no dispute about the fact that while the registering officer, while the registering officer under the Registration Act, under the Registration Act, may not be competent to examine, may not be competent to examine whether the executant of a document, whether the executant of a document, executant of a document has any right, title or interest, has any right, title or interest over the property, over the property which is the subject matter of the document, which is the subject matter of the document presented for registration, presented for registration. Rather he is obliged, rather he is obliged to strictly comply with the mandate, strictly comply with the mandate. Are you fine, Shivani? Take rest.
obliged, जो एक मिनट क्या लिखवा रही थी मैं, obliged to strictly comply with the mandate of law contained in the act, with the law contained in the act. With the mandate of law contained in the law. Huh? Act or in that law, one and the same. क्या कह रही है मैडम, बोलो. I am sending you this judgment which is of 18 pages, and that judgment is to be read by all of you, right? So this is in divine evening, morning and 24, right? देखो ये judgment आपको पहुंची. नहीं आ रही है बच्चे, आ रही है. क्या अब आ जाएगी, अभी इतने आगे लिखते हैं. आगे हाँ, 5 मिनट ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. एक एक दो जजमेंट्स ही रह गए बस, देन वी आर डन विद इट. मतलब ऑफिशियली वी आर डन विद द रजिस्ट्रेशन, एक्सेप्ट द स्टेजेस दैट विल डिस्कस. और कल थोड़ा सा और मस्ती कर लेंगे, क्या दिक्कत. हाँ जी, तो आ दें जी. क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं, सर्वाइकल हो रहा है? हाँ, एक तो तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी मतलब ये सब. कल वो साक्षी दिख रही थी मुझे, इधर इसको देख रही हूँ मैं. मतलब क्या तुम लोग खाते नहीं हो क्या कुछ खाना खुना? हाँ. इवन इफ वन पर्सन इज लाइक फैटी डजंट मीन खाना खाती होगी वो तो सारनी, बट इनकी तो सेहत ही बताती है. इट्स जस्ट cramps. You're doing exercises or something or yoga? Okay. नहीं, ये मौसम ही अजीब है. ये मौसम ही अजीब है जिसके अंदर यू फील डिजी कॉन्स्टेंटली, है ना. टुडे आई मतलब yes, since yesterday I am feeling so dizzy, so lethargic that I don't know how to dictate it. I get lost somewhere and I feel like I should get a sound sleep. Maybe the reason is I'm not getting it. Maybe the reason is even I'm getting it, still you are feeling dizzy. So I think second option is applicable upon me as well. अभी तो नींद में ले रही हूँ बट फिर भी आ रही है ना. पीयूष बता रहा है हमें कुछ, क्या कह रहा है? तेरे को भी आ रही है? नहीं आ रही, फ्रेश है तो बिल्कुल. I to feel like having a black coffee so that at least I can teach you 2 more lectures, in 2 more lectures. Otherwise I'll be sleeping here. है ना? Same. How many of you are feeling dizzy? One, two, almost everyone. है ना? तनु को भी? तनु है ना आपका नाम? हाँ जी मैडम, आपका नाम भूल गई मैं. हरप्रीत. देखो एक दिन नहीं आते, नाम भूल जाती हूँ. होगी ना, हाथों को ब्रेक मिल गया ना. और 2 मिनट लो. अच्छा ठीक है, कोई नहीं ना. सीपीसी में तो आज पढ़ना है, ऑर्डर 14-15 फिर लिखवाऊंगी. लिखने वाला काम आज. कॉन्स्टी में हाँ लिखने वाला है ना. कितना तो मुझे कितना वो करते होगे ना कई बार कि ओहो मैम के लेक्चर इट्स ऑल अबाउट राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग. नहीं होता ऐसा, कभी तो फील हुआ होगा.
आई थिंक सीनियर टीचर्स का सबका यही है, वो लिखना पड़ता है खुद. It's implied that you have to write whatever they are saying. It's like it should be in your notebooks. बस ये है उनका. मतलब the aura that he has, nobody can have that aura. That is what he possesses. I mean, I was discussing regarding Sir because Sir has taught my father also. So, हाँ हाँ मेरे father उनके student है. ठीक है. वीसी सर, नाल सर, नाल सर. तो वो बता रहे थे that इनको बुलाया जाता ना, these all the academies that they go in, या there are certain judicial training camps which are being organized, तो उनमें special lectures होते हैं. So one of my close aide, she was telling me, she's a madam there, and she was telling me कि जब sir आए, and the moment he started criticizing that what are you doing in that manner, even though they are at the DJ level. And the moment they started criticizing, we also got to realize that yes, these are the wrong things in the judgment that the judgments are being passed by the Honorable Supreme Court as well. वो कहते हैं कि एक पेज की जजमेंट थी, उस एक पेज को 1.5 घंटे में किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया ना, दैट इज द ब्यूटी, दैट इज एन आर्ट दैट ही पोजेस, एंड ही हैज दैट ब्यूटीफुल आर्ट. मतलब उनके लेवल को मैं कहती हूँ, उनकी एक्सपर्टीज को मैं कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता. ही हैज दैट इमेंस. पता है क्या द ड्रॉबैक दैट यू पीपल फेस एंड द ड्रॉबैक दैट यू हैव इज कि नहीं नहीं स्ट्रेंथ कम. द रीजन इज बिकॉज योर बेस इज नॉट क्लियर. They are not here to clear your base. They are here to tell you the experiences that they had as well as the knowledge that they possess. उसके लिए you should read beforehand. तो अगर आप वो पढ़ के आ रहे हो ना टॉपिक और उसके बाद आप उनको सुन रहे हो, ओहो, जो वो है ना, कोई नहीं हो सकता. मतलब अभी गुरपाल सर नहीं आना बंद हो गए हैं, तो हेल्थ इश्यूज, बट वो भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. टीचिंग सर भी तो सेम है. गरेवाल सर भी. गुरपाल सर, गुरपाल सर, तुम नहीं मिले गुरपाल सर से? As I would say, हाँ ये फैक्ट है. मोर ओवर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत. मैं बताती हूँ, आप लोगों ने सुना नहीं होगा शायद, मतलब नॉट बूस्टिंग अबाउट दिस फैक्ट. There was this person for a contract act when we were doing the same like you are doing. Professor R.C. Srivastava. He has written a book also.
as many of my students know that he's my mentor and he will always remain my mentor. The way he used to teach us na, एक aura होता है वही कह लो. At that time he was around 76 77 when 10 12 years back. So when he used to teach, उनको ये लगा लो, he has to come all the way from Noida to this Delhi, and then he had that back problem and daily spray करके बैठना 2.5 घंटे. तुम तो 1.5 घंटे में बोर हो जाते हो, 2.5 घंटे का एक लेक्चर होता था उस टाइम. We used to stand here with a queue कि जी फर्स्ट बेंच चाहिए. बैठे, उन्होंने भी स्टार्ट करना है. He never used to dictate like वीर सिंह सर, गरेवाल सर. and वो 2.5 घंटे हमारे पेन नहीं रुके. और तुम तो एक ही पेन यूज करते हो ना. यू हैव सीन माय नोटबुक्स. आई यूज्ड टू कीप इट बंडल ऑफ पेन्स डिफरेंट कलर्स एंड स्पैन ऑफ 2.5. और वो दिन है और आज का दिन है. मैंने कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक फर्स्ट टाइम लिया है यहाँ. मैं वो तो चलो ये लोग बताएंगे ऑनेस्ट फीडबैक, बट आई नो व्हाट ही हैज टॉट मी, व्हाट इज देयर इन माय माइंड, एंड सिंस देन इट्स नॉट दैट टुडे क्योंकि मैं अब तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बट वो तब से. क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे वो उसी तरीके से मेहनत की. वो चीज काम आती है. He is no more. Although we were in talking terms, like personal talking terms, he was such a good person, human being. The moment he got his book published, I wanted his autograph, but we got late. In the meanwhile, he was diagnosed with blood cancer. He died there and then. तो मुझे उनका autograph नहीं मिला, and I miss it. But अभी I was reading my notes, so I found his handwriting of correction something. तो वो highlighted है मेरे उसमें. These are the memories that you have, है ना. वो एक मेंटोर की मेमोरीज वो नहीं जाती. लाइकवाइज एक वीर सिंह सर हो गए और एक वो सर थे मेरे. इनके खिलाफ तो तुम चुरको और देखो फिर मेरा औरा, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें. बाकी के लिए ऑल्सो आई हैव रिस्पेक्ट, बट हाँ ठीक है, आई कैन हियर कि मे बी देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी की समझ नहीं आ रहा, बट अदरवाइज इनके खिलाफ तो नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता. मैंने इनका एक दिन आई थिंक पीयू ने ऑर्गेनाइज किया था इनको कोई स्पेशल लेक्चर, है ना, कुछ कुछ ऑर्गेनाइज किया था, बहुत पहले किया था व्हेन आई वाज परसुइंग माय लॉ, इवन एट दैट टाइम. सो विंटर्स थे, ही यूज्ड टू वेयर दैट लॉन्ग कोट. अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो वो लॉन्ग कोट पहनते हैं ना विंटर्स में, एंड ही हैज दिस लॉन्ग फिंगर. सो द वे ही स्पीक्स एंड सेज, एंड वो यूज करते हैं ऐसे, ध्यान करना, नोटिस करना. I was mesmerized by his skills and I was like, Papa, he is the gem. And he told me that he taught us jurisprudence. उनको juris पढ़ाया है, हम लोगों को तो खैर opportunity नहीं मिली उनसे पढ़ने की, और अभी वो evidence के master है. ये पता है, ये चीजें बहुत याद आएंगी तुम्हारे को. कब याद आएंगी? जब तुम जजेस बनोगे ना, या जब तुम कहीं किसी फील्ड में होगे और वो चीज याद आ रही होगी, गेट टू नो, मेमोराइज करोगे, है ना. अब हमें खुशी मिलती है. अब सीपीसी जब पढ़ाती हो ना, और अब जितने स्टूडेंट्स अभी लगे हैं जैसे पंजाब या हरियाणा में, वो पूछते हैं कि मैम आपके नोट्स में से देख के ना ये चीज हमने करी. सो आई फेल्ट गुड कि अच्छा ऐसा भी हुआ था. सो आई एम हैप्पी कि ये हो रहा है. ये चीजें ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है. बनो कुछ, फील, गिव अस दैट फीलिंग ऑफ प्राइड, है ना. वो चीज जल्दी जल्दी दो अब, क्योंकि अभी हरियाणा रिजल्ट्स आर वेरी लेस. द रीजन बिहाइंड दैट इज स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन दैट मच सिलेक्टेड एंड कुछ मेंस में रह गए. बट पंजाब लास्ट ईयर वाज एग्जाम्पलरी रिजल्ट्स दैट वी गॉट, नो डाउट. इस बार भी बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल वी वांट मोर नंबर्स. बच्चे क्या है ना, कंफ्यूज्ड बहुत होते हैं. इजी वे, मतलब आई यू वोंट बिलीव, मैंने जस्ट अपनी सुखपाल सिंह खेरा खत्म करी है जजमेंट 319 की, एंड सेम जजमेंट वाज देयर इन पंजाब पेपर, एंड दे वर कॉलिंग ऑल द स्टूडेंट्स हियर कि वो जो आपने 11 पॉइंट्स लिखवाए थे ना, लिख के ऐसे 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 करके. ठीक है, चलो गुड. वो चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं, बट हाँ, जितने भी सीनियर टीचर्स हैं उनकी क्लास में पहले पढ़ के आओ और फिर लगाओ और फिर देखो मजा. वो मजा अलग है. वो तुम जो हमारे साथ कंपैरिजन करके एक्सपेक्ट करते हो ना, हम तो तुम्हें स्पून फीडिंग कर रहे हैं, जो कि गलत है. ठीक है, उनकी लगाओ क्लासेस जो लगाने लायक.
बच्चे स्पून फीडिंग ना कर तो रहे हैं, रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हुई है ना। हमारी ड्यूटी है करनी इस टाइम पे, मजबूरी बन गई है, ड्यूटी भी नहीं कहूंगी। बट जब आप पढ़ के आओगे और फिर आपको ये लग रहा है कि सपोज आज मैंने आपको ऑर्डर 14 कराना है और आप ऑर्डर 14 पहले से पढ़ के आए हो बेरैट में से, सो यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे वो चीज है। तो वो चीज करके आया करो, तभी आप कर पाओगे। और यहाँ तो फिर भी बोल लेते हैं, वहां तो हम नहीं बोल पाते, तो तुम तो क्या ही बोलोगे, है ना। तो 1.5 घंटा लिखो। बहुत तेज। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी मिलते हैं यहाँ पे, वो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न करके ही चले जाते हैं, वो बन नहीं पाते फिर कुछ। ये रीजन है। इसीलिए बोला जाता है ना, स्टिक टू वन फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवन। लिख लूं अब तो हाथ तो में आराम आ गया होगा मयंक जी के। चलो सर, देखो बातों में पता चला कितना टाइम बीत गया। टाइम ही हो गया है। ये इसका नाम लिख के तो छोड़ दो। टी जॉर्ज, टी जॉर्ज वर्सेस लिली थॉमस। LILLY, LILLY। हाँ वो दूसरा है, वो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। हाँ ये देखो, ये अपने अलग वर्ल्ड में है ये लड़की। कहाँ है ये, कहाँ पड़ा? हाँ क्या कह रही थी तू, बता। सरला मुद्गल एंड लिली थॉमस। व्हाट वाज मेनली हेल्ड। आज नींद आ रही लड़की को। लिली थॉमस 2024 सुप्रीम कोर्ट, 2024 सुप्रीम कोर्ट। लिली थॉमस फिर से आ गई। दैट्स अ डिफरेंट लिली थॉमस। लाइन लिख लो प्लीज एक। छोड़ो मैम का क्या मतलब है, लिख लो। पावर ऑफ अटॉर्नी granted to an agent impliedly stands revoked, impliedly stands revoked when the principal acts, when the principal acts
independently, and such act is known to the agent as well as to the third party, इसको लिखो ब्रैकेट्स में रेड विद सेक्शन 207 आईसीए, read with section 207 ICA. ICA, you understand? Thank you. Now there is one judgment which is left. 207 ICA. There's only one section which is left. One judgment which is left, and the stage. We will not take more than 30 minutes to complete that, but 1 hour we'll be discussing that answer जो वृत्ति ने बोला है वो discuss करेंगे, and then the basic reviews and everything, right? Okay जी, ending the session. वृत्ति कल discuss करेंगे for sure.